हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए केस स्टडी में। एक एसर का आया है E531। प्रॉब्लम क्या है कि ये डेड है, पावर लगाते हैं, इनमें पावर है। तो चलिए एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने ओपन कर लिया है और इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से एक कैपेसिटर भी गायब है। तो चलिए एक बार पावर लगा लेते हैं। पावर लगाया, बोर्ड में 19 वोल्ट प्रेजेंट है। फिर भी बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार सबसे पहले तो ये जो कैपेसिटर है इसे भी चेंज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने कैपेसिटर चेंज कर दिया है। एक बार देख लेते हैं एलडीओ बन रहा है या नहीं।
आप देख सकते हैं एलडीओ बन रहा है, डिस्प्ले बन रहा है, बट फिर भी ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसका क्लीन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 का जो इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है। पहले आयो एक बार सेट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसका एक आईसी चेंज किया है 3.5 का, पुराना ऐसे ही रखा हुआ है। और लगाया, देख सकते हैं ट्रिगर हो चुका है, फैन स्पिन कर रहा है। नया खरीदवाएगा, मोबाइल लीजिए, ईएमआई में ले लीजिए, ऐसा नहीं है।
शरीर फ्रेश हो गया, नैप हो गया। समझे? दिन हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है।